Welcome to Testbook. We at Testbook try our best to provide you with the highest quality of videos. To download free previous year papers with solutions, free classes, study plan and assessment tests, check out the links in the description. So today will be the first step towards the numerical problem solving. ठीक है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आज हम पहला कदम बढ़ाएंगे. और वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, if you want to do calculations, if you want to solve the numerical problem, this is something which we must understand very clearly. Per unit system of calculations, right? This is something that we must understood. First of all, this will set up a necessary mathematical basis for us, along with very many fundamentals will be clear, and the mathematical basis will be set up for solving the numerical problems not only of electrical machines but of power systems as well. All right, let us understand this. मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ, say I have got 4 students and I ask them their result. ठीक है, 10th का 12th का कहीं का मैं उनसे रिजल्ट पूछता हूँ, and they tell me their results, the marks obtained by them. First person says I've got 910 out of 1000. Second person says I've got 640 out of 800. Third person says I've got 490 out of 700. And the fourth person says I've got 300 out of 600. Alright, 4 different students, I asked them some particular result that they have obtained, and they tell me their results like this. सर मेरे 910 आए हैं 1000 में से, सर मेरे 640 आए हैं 800 में से, सर मेरे 490 आए हैं 700 में से, सर मेरे 300 आए हैं 600 में से. इस तरीके से उन्होंने अपने मार्क्स मुझे बताए. ऑलराइट, अब देखो मैं इनसे क्या बोलता हूँ, मैं इन 4 स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बेटा देखो, मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपका ग्रैंड टोटल कितने में से हुआ है. मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपका ग्रैंड टोटल 1000 में से हुआ है कि 800 में से कि 500 में से. नो, आई एम नॉट कंसर्न. आप तो एक काम करो, परसेंट बताओ. क्या बताओ? परसेंट बताओ. पर सेंट, पर सेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट भैया? हेलो, व्हाट इज सेंट? व्हाट इज सेंट? 100, 100, per 100, per 100, per 100 means what? What I fundamentally tell them कि आप मुझे परसेंट बताओ. परसेंट बताओ मतलब मैं इन चारों को क्या बोलता हूं, एक का बेस है 1000, एक का बेस है 800, एक का बेस है 700, एक का बेस है 600. So what I tell them कि बेटा, first of all you do one thing, simplify the data for me, make your base common and tell me out of 100. Make your base common and tell me out of 100. Alright. So now what happens is, when I tell them कि आप 100 में से बताओ, तो हो जाएगा कुछ ऐसा कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा. सही लिखा हूं क्या? सही लिखा हूं? तो ये बन जाएगा 0.9 पर यूनिट, 91 पर यूनिट, और 91%, 0.8 पर यूनिट और 80%, 0.7 पर यूनिट और 70%, 0.5 पर यूनिट और 50%. है ना? तो अभी एक मुझसे बोल रहा था मेरे सर 910 आए थे 1000 में से, दूसरा बोलता था 640 आए थे 800 में से, तीसरा ये, चौथा ये. ये जो डेटा था जो कि टॉप पे लिखा हुआ है आपके, दिस डेटा वाज अ सो कॉल्ड रॉ डेटा. कौन सा डेटा था ये? रॉ डेटा.
सर रॉ डेटा ये क्या होता है? रॉ मटेरियल सुना था हमने, तो रॉ डेटा, रॉ का मतलब समथिंग विच इज नॉट प्रोसेस्ड, समथिंग विच इज नॉट इन इट्स फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म। जैसे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जाता है और एकदम पैकेज होके निकलता है ना, एकदम फिनिश प्रोडक्ट होके निकलता है, रॉ डेटा है ये। रॉ डेटा है मतलब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा आपका है, दिस डेटा इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिंप्लीफाइड डेटा। इसको क्या बोलते हैं बोलो? सिंप्लीफाइड डेटा बोलते हैं, ठीक है। इस वाले डेटा को देख के शायद मेरे लिए शुरू शुरू में डिफिकल्ट हो ये बता पाना कि सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे कम किसके, ठीक है। बट यहां से मैं तुरंत बता दूंगा कि सबसे ज्यादा ये, हालांकि मैंने लिखे हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो दिस इज अ मोर सिंप्लीफाइड डेटा, ऑलराइट। whatever we are doing here with marks whatever we are doing here with marks, we do the same thing with power, voltage, current, and impedance in any electrical system. And when I say electrical system, I mean to say a synchronous machine, an induction machine, a DC machine, a transformer, a transmission line, an entire power system at large, any electrical system, and other systems as well. Maybe mechanical system, maybe some other system. But here we shall talk about the electrical system only because we are studying electrical engineering. Alright? टॉर्क की पर यूनिट वैल्यू हो सकती है, स्पीड की पर यूनिट वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो सब मैकेनिकल वेरिएबल्स है। हम इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्क्स के साथ हो रहा है वही हमें पावर, वोल्टेज, करंट और एम्पीडेंस के साथ में करना है, ठीक है। पर यूनिट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू चूज द बेस वैल्यू। बेस वैल्यू चूज करना सबसे, जैसे यहाँ पे मैंने 100 चूज किया ना, वी हैव चोजन 100 एज द बेस वैल्यू। So to start the calculation in per unit, we have to choose the base value, and we have to choose the base value for the power and the voltage. ठीक है, we have to choose the base value for power and the voltage. Power और voltage की आपने चूज कर ली, तो पावर को वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा, है ना, और वोल्टेज को करंट से डिवाइड करोगे तो इम्पीडेंस आ जाएगा। तो दो के लिए चूज करेंगे, we shall choose it for the two, and other two will just be derived from it. When you divide power by voltage, you get current. When you divide voltage by current, you get impedance. Alright. So we have to choose what the base value for power and voltage. बराबर, यहां से हमें शुरुआत करनी होती है। So let us choose. Say there is a system. कोई एक पावर सिस्टम है, इसके अंदर जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, फिर एक ट्रांसफॉर्मर है, फिर कहीं जनरेटर है या कोई इंडक्शन मोटर लगी है एज अ लोड। अलग अलग रेटिंग के क्या हैं, 100 MVA 11 kV का ऑल्टरनेटर है, 11 kV बाय 66 kV का ट्रांसफॉर्मर है, कोई 66 kV बाय 33 kV का ट्रांसफॉर्मर है, कोई एक 50 किलोवाट 10 kV की इंडक्शन मोटर है। Now what I am having is I am getting different power ratings, I am getting different voltage ratings. So to simplify the values, we need to choose the base value. जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, अलग अलग मार्क्स थे, अलग अलग में से हमने एक बेस वैल्यू चूज की और सबको एक बेस पे लेकर के आए, वैसे ही हम यहाँ पर एक बेस चूज करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है वोल्टेज बेस और पावर बेस चूज करके। When I say power, I mean to say the apparent power, that is MVA, voltage into current. Because dimensionally, what is power is voltage into current. And when I say voltage, I mean to say the kV as the voltage. ठीक है, तो सबसे पहले the first thing first that I want to explain is we can have two possibilities when it comes to three-phase circuit. आपको पता है ये जो मैंने अभी आपके सामने सर्किट बनाया, ये वाला, ये क्या है? एक पावर सिस्टम है। इस पावर सिस्टम में सेंडिंग एंड से लेकर के तो रिसीविंग एंड तक पूरा सिस्टम ये एक थ्री फेज सिस्टम है।
This is entirely a three-phase system. When it's a three-phase system, all of you are familiar, there can be two topologies of the circuit. It can either be a star connected circuit or it can either be a delta connected circuit. So if it is a star connected circuit, all of you are familiar. If this is line voltage, this must be phase voltage. This must be phase voltage, which is VL by root 3. And line current itself is the phase current. Line current itself is the phase current. Alright. And this is impedance of every phase. Let me call it ZPH, ZPH, and ZPH. Any impedance is always per phase. Voltage can have line or phase value, current can have line or phase value, but impedance is always per phase. ठीक है, impedance हमेशा per phase ही होता है. अब अगर इसके लिए मैं आपसे कहूं कि टोटल वोल्ट एम्पियर निकालो, टोटल वोल्ट एम्पियर, व्हाट इज टोटल वोल्ट एम्पियर? एक फेज का निकाला और उसमें 3 का गुणा कर दिया. जस्ट कैलकुलेट इट फॉर वन फेज एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. आई वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ line values. So it will become what? Root 3 VL IL. This is total volt amperes. Alright. If we want to write kilovolt amperes, we have to multiply it by 10 to the power minus 3, converting volt amperes into kilovolt amperes. Okay. Now we have a delta connection. Now we have a delta connection like this. ठीक है, यहाँ पे भी हर एक फेज का इम्पिडेंस ZPH, ZPH, ZPH है. ठीक है, आप लोग फेमिलियर हैं इन चीजों से, बट ये परमानेंट सिस्टम में हमें काम आने वाले हैं पूरे पूरे. और ये है आपका क्या? BL. यही फेज वोल्टेज के बराबर होता है, आपको पता है. ये है आपका लाइन करंट, और ये जो फेज करंट है ये लाइन करंट डिवाइड बाय रूट 3 होता है. यहां पर भी मैं वोल्ट एम्पियर निकालने जाऊं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा. 3 टाइम्स VPH IPH है ना, 3 टाइम्स VPH into IPH. I want to convert them into line terms, so I will write it as VL IL by root 3. Right? So it will also be root 3 VL IL. What is the whole moral of the story? The whole moral of the story is, whether it is a star connection or a delta connection, for a three-phase circuit, volt ampere is always root 3 VL IL. ठीक है, volt ampere, and when I say volt ampere, I mean to say power. Volt ampere means power, apparent power. Alright. So root 3 into VL into IL is the total volt ampere for any three-phase system. Alright, we must write it here. Whether star or delta, the total three-phase power is always root 3 VL IL, and that's a very important statement. That's a very important statement. Alright, इसको आप सितारों से सजा लीजिए, बॉक्स में बंद करिए और सितारों से सजाइए. Alright. So whether star or delta, it's always root 3 VL IL in line terms. यहाँ से हमें एक मैथमेटिकल बेसिस मिलता है, इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel to get updates on more such educational videos. Don't forget to check out the links in the description for downloading free notes for GATE EE 2022 exam.